नमस्कार। आप सभी का इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की आयुष समृद्धि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सीरीज के 162वें पड़ाव पर हार्दिक स्वागत। मैं इस वेबिनार सीरीज के लिए शानदार कोऑर्डिनेशन के लिए आदरणीय प्रोफेसर कामिनी धीमान जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और डॉक्टर जल्पा अभय गांधी जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मैडम पुणे से हैं, कंसल्टेंट वेदा केयर आयुर्वेद पंचकर्म एंड फर्टिलिटी सेंटर, डायरेक्टर हैं इरा कंसल्टेंसी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं ऐसी मैडम डॉक्टर जल्पा अभय गांधी जी का स्वागत करता हूं और आगे की कार्यवाही ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आदरणीय कामिनी धीमान जी को सौंपता हूं। जी नमस्कार पवन जी। नमस्कार। पार्टिसिपेंट्स अभी जुड़ेंगे एंड डॉक्टर जल्पा, वेलकम टू यू in continuation of male wellness series, women wellness series. We have started all the topics one and all, one by one, and today we will discuss the basti therapy we use in the female gynecological disorders. So what do you, Jalpa? You present your topic and then we will have question answers from participants and then we will discuss the topic. Over to you, Jalpa. Thank you, ma'am. रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसूतानशेषान् औत्सुक्य मोह आर्तिदान जगान य पूर्व वैद्य नमस्तु तस्मै। सब गुरुवर्यो जय धन्वंतरी। लॉर्ड धन्वंतरी और सभी गुरुवर्यों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। Before starting the lecture, I would really like to thank you, Dr. Kamini Dhiman ma'am, to invite me on this platform. Is the screen visible, sir? Yes, visible. Okay. So, this is a very interesting topic because nowadays fertility issues are increasing. As we all know, gynecological disorders are increasing, and people are really interested to know what all procedures of panchkarma are they fit into this. And I'm very proud that people are really happy to undergo the panchkarma and basti procedures and conceive by this. So but a little disappointing thing is that whenever more than patient, whenever my colleagues or other people just ask me that let me know what basti can I give for ovulation, what basti can I give for PCO, what basti can I give for menstrual abnormalities, endometrial thickness. The only thing comes in my mind is, can't you ask me what basti can I give when there is a Vatkapha Dushti, Agni Mandya, Sthaulya patient, Avranchanya Samprapti? I mean, if you ask this way, if you think this way, then there will be more scope of you understanding this core concept. People are not coming to you just for enema. They are coming to you to get the solution for the gynecological disorders or fertility issues. So in all these things, the only thing which I get to know is if you just try to link that ovulation is equal to this basti, PCOS is equal to this basti, in that case, maybe in that patient you can get the results, but not every time. So at the end of this lecture, only the aim is that we should talk at least Ayurveda practitioners who are actually deep down in this topic, practicing it on daily basis. Obviously there should be a healthy discussion, there should be a conferences or discussion on the topics that what basti should be administered when. But I would really like if people will talk in the terms Shay Pradhan, Vat Pitta Pradhan, Pitta Kapha Pradhana, Pitta Rakta Pradhana, and then what to do. So this is my small effort to think in that way. So a very beautiful quote of Charak Siddhi showing the importance just to get into the topic. Have quoted 2-3 importance. Otherwise, we all are very much familiar with Basti's
indications and the benefits. So yashcha striyaha vatakrita upasargaha garbham na grunnati nrubi sameta. Even after having relations, striyaha vatakrita upasarga, because of vatakrita vayadihi garbham na grunnati. Shina indriyaha ye cha naraha krushascha. Nara is shina indriyaha and krushaha. Bastihi prashasta paramam cha teshu. I just want to focus that when we focus only on females, the shloka literally says that even in Naraha of Shena Indriya and Krushaha, Bastis Prashasta Paramaha. Cha Teshu. Teshu means Sanskritaha, both of them. Okay, so we have gone through this shloka many times, but I just want to focus these 2 points. Then we'll move ahead. So we all are familiar with the most favorite shloka of Yoni Vyapada. न हि वाता धृते योनि नारेणां सम प्रदुष्यति श्रमयित्वा तमन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम्. To get into the topic that yoni rogaha or yoni vyapada cannot be without a vata disease, vata disorder. That's why Basti as equal as is more equal because vata is more equal. While going through this making presentation, I got a very beautiful quote in Bhel Samhita. Not only that, Basti Karma, in the introduction of Niruha itself, they have written beautifully, Amrutapamam Basti Karmam Kurute Suprayojitam. If prayojan of basti, what to use, when to use, and how many bastis are to be given, if it is done with a suprayojan, then it is amrutopama. And apart from that, more interesting is hanyat vata rajas strinam vandhyam garbham labhate cha. That in stri rogaha, it manages the vataha, rajaha, strinam vandhyam garbham labhate cha. In the introduction of Niruha itself, they have given the emphasizes that it is so much important in Vandyatva. So as we all know, there are 3 types. So this presentation will be in the form of Avastha Vishesh of a Basti. We know we need to give Anuvasan, we have to give Niruha, but which, where and when. So this is more focusing on it. So let's start with our first Dravya itself, that is Dashmulaha Tel Anuvasan. Very basic. Everyone will say we use it daily. But when to use it and how to use it. So when we study the Dravyaha Vishesha of Dashmulaha, so it is primarily Kashaya Tikta, Guna is Laghu Ruksha, Potency is hot, and Vipaka is Katu. So mainly Dashamula is in Shotahara Mahakashaya, and the Shloka of Dashmul Tel. To be very interestingly knowing it, it is from the Shirashul Adhikaraha. Okay, we never thought that this Tel directly is in Shirashul Adhikaraha. And the very interesting line of the shloka is Nasyena Akala Palitam. Nasyena Akala Palitam means Nasya of this helps to prevent Akala Palitam. Okay, so what can be our thought processes? This is just, I tried to analyze this. That shloka itself says that Nasya of this typical tela, that is Dashmul tela, it is useful in Akal Palita. That is, Akal Palita is a condition of early aging. That means in the age when Vruddha Avastha is not expected or early Vruddha Avastha is seen or signs of early Vruddha Avastha is seen in the patient. So we can come to an analysis that thus the Nasya of Dashmul Tel can be administered in perimenopausal symptoms. Okay, so have I used it? So yes, if the patient of this condition, Vata Kapha condition, shows up on Samprapti, complaining of perimenopausal symptoms, obviously we can use it. The next important is in gynecological or in univyapadaha, where this Dashmula Tela is used. So if seen depth into the Univyapad Chikitsa, we all know Udavartini Univyapad, and it is used. And practically Udavartini, if we undergo the Samprapti, it is Shula Raja Pravartana, and once the Raja is Pravartit, the Shul reduces. Okay, so it is a condition of Urdhvaga Vataha, that is Vata leaving its own Anulomanagati, it goes into the Urdhva Gagati, and that is why the Samprapti of Udavartini happens if Vata Shul reduces when it is Anuloman. So we already know from the Samprapti symptom itself that Anulomana is the line of principle. Dashmul is one of the best Anulomana.
So useful in gynecology, then Udavartini Yoni Vyapad like cases. For example, dysmenorrhea or Kashtartha. For example, now if we go into the modern science, dysmenorrhea itself is of two types, primary and secondary. Secondary always have a secondary inflammatory factor present, maybe adenomyosis, endometriosis, bulky uterus, inflammation, right? So already Dashmula is best for Shotahara Ganaha, right? So any type of inflammation like condition in the uterus, example bulky adenomyosis, endometriosis, or obese PCOS with painful menses, Dashmula Tela Anuvasan is ideally used. So वातला योनि व्यापद or vata prakopa avastha in garbhashay or apan kaksha. So sometimes what happens that there is only the hetu but not any sign or symptom present. Hetu in the sense a maybe 20-25 years old female gaining weight, traveling a lot, driving a lot. So hetu is what? It is a hetu of apan kaksha dushti, showing symptoms delayed menses slowly and dysmenorrhea. So this is already we can understand that the hetu is vata prakopaha along with the kapha dushti. So vata kapha is the combination. Anulomana is expected because apan kaksha dushti is there. So in that case we can use Dashmula. So this is how we can customize, or we can imagine, or maybe we can write down somewhere that which Tela Basti, which Niruha Basti we can give for what. So maybe in an hour I have collected few 10 Anuvasanas and few Niruhas. So I will put my best to differentiate the Vikalpa Bhedaha of each Basti. So next is Narayan Tel. That is also very commonly used. But when to use? So if we try to understand its reference or origin, so it is a Vata Vyadhi Chikitsa. Okay, fine. Now the basics are Vata Prakopa or Vata Vyadhi Chikitsa is differentiated into two parts. One is अवरोधात्मक वात व्याधि and one is shayatmak vat vyadhi. Then when to use Narayan Tela? So let's go towards its dravyas. So we will try to understand that what exactly line of treatment we have to follow. So one reference is of Yog Ratnakar, and the Sharangda Samhita also is the reference of Narayan Tela. So if there is it is a very huge, and actually we have underrated this oil because it has 33 drugs in it and very potent. So if we just go through the drugs, most of them are Madhura, Tikta and Katurasatma, and maximum drugs are of Ushna Gunaha. Okay, so in the shloka itself, they have said we can use it for Navana, Abhyanga, Panan, Bastav. Okay, Bastav, it means both the Basti, Uttar Basti as well as Anuvasan Basti. If we further read its Falashruti, it says the important one related to gynecological disorders I have just highlighted. So we'll go through that. Gatra, Shosha, Indriya, Dhvamsa, Asruk, Shukra, Jwara, Shayan, Vandhanapi Nari, Putram, Prasuyate, Vataroganam, Nashanam, Tailam, Uttamam. So from these few words itself, we can get to know that what is the avastha. So let's try to define. Shosha in the body is due to Vata Pittaha. When there is Indriya Dhvansa, so it can be used in male infertility also, because if we use this analog which is used, that Yatha Narayano Deva Dushta Detya Vinashanaha Mo Gajo Va Turagas Tailat Asmat Sukhi Bhavet. So basically it is when there is Shayatmak Samprapti, then the sale is more useful. So it is more of a Santarpana Janyaha Telaha, which can be used in when the Samprapti goes for Apatarpan Janya. Okay, so Gatra, Shosha or Shaya, or maybe we can say when the patient complains that after a long time of debility, okay, long chronic, maybe any a long time of treatment or long time of debility due to any secondary cause. Maybe patient is having another, maybe grahani, or maybe aghatach or shatakshina, and there is a debility or long time of dorbalya, then this can be obviously thought of. So detailed avastha vishesh which I could find with this is, it is a Bruhan category tel, because Shatavari, Swaras and Shir is used in its siddhi. Okay, so see, now I have just read the Falashruti part and we are trying to find the avastha vishesh, but obviously from the content also we get to know the is it going to a Santarpan type or Apatarpana type.
So if we go through the content, so Shatavari Swaras is used. Swaras is a very potent, even potent than the Kwatha. Okay, so Shatavari Swaras and Shira is used in its Siddhi. Okay, so it already has a Gamitva towards Rasa Dhatu. That's why Shay Pradhan Samprapti, Shosh Pradhan Samprapti, Artha Pradhan Samprapti, where Apatarpan is happened. This is the this fits the best. So and the another important thing which I could observe in this is that is maximum Sugandhi dravyas are used. So while studying how to study any kalpa in my UG, we were taught that Sugandhi dravya. So Sugandha gun is only of Parthiv Mahabhut. Okay, and whenever we are dealing with Garbhashaya, okay, Apan Kaksha, so always we have to keep in mind about Prithvi Mahabhut regulation in the body. If Prithvi Mahabhut is, we can say, shy or less, or it is quality is not good of Prithvi Mahabhut Agni is less, in that case, we find more cases of abortions, more cases of heavy blood flow, more cases of what we can say mental disturbances or mood swings. Okay, so in women category, Apan Kaksha, which is where Garbhashaya lies, that is itself a Prithvi Mahabhut a dominant area, and where Sugandhi Dravyas directly act on Prithvi Mahabhut. And this they'll have a prakshepa of a Sugandhi Dravyas. And another important thing is Sugandhi Dravyas always act on mind because Sugandha is a guna. It is a guna of mana. Okay, for gynecological conditions, Shaya Pradhan Samprati, I said, means when there is a Shaya of Artha, Rasa and Rakta. Okay, or in conditions of, for example, in gynec practice, cantimensis, when there is a low endometrium thickness. See, there are many patients of tuberculosis of reproductive organs. That is the typical case when errant tail fits because it is Dwara, Shaya, Gatra, Shosha. Okay, and TB of reproductive organs, why have we used this word? Because many times, I mean, modern science itself says that it is a predominant factor which may be affecting the tubal motility or tubal blockages. Okay, so in patient exposed to TB of any organ can have a more chances of tubal blockage. So this tail Uttar Basti, as it is used for both, maybe in Anuvasana or in Uttar Basti, this tail fits in that Sampra. Krusha patient means a patient who has a lost weight due to any other systemic condition. I said, see, we never know as in we are in the generation, any age group can have any type of disease. If a patient, for example, comes to you with a chronic disease or with a history of radiations because of any other systemic condition, obviously in that patient we need something which is bruhan, which is rasa dhatu poshak, shatavari swara shira siddha plus santarpan. So this fits in that case. As I said, modern science says the past history of TB of any reproductive organs leads to tubal blockages, and where Narayan Til Uttar Basi fits the best. While studying for this, I got two very important references from obviously scientific evidences that in tubal block, it study 70% participants experienced restored of tubal patency, 53% achieved conception within 3 to 12 months. I was happy to read that because it matched with my thinking. But again, the thing is, 53% only achieved conception because might be there is some taratamatva which the maybe because of the study protocol might not have followed. Very good thing that it has tubal patency was achieved nicely in many patients. Another important place where this Naranthel is used is for Garbhini Paricharya in 8th month, as in Acharya Charaka explains that Madhura Aushadha Siddha Taila Anuvasan and Yoni Pichu helps in birth preparedness. So in there was also a study Narayan Tail used as Anuvasan in Yoni Pichu to labor and immediate postnatal outcome was observed. And the oil is believed to prepare the lower segment of the uterus and cervix, promoting normal labor. See, we need to understand that some conditions in Ayurveda is a regime.
So apart from any dosha dushya avastha vishesh, that is regime like dinacharya, rutucharya, sutika paricharya, rajaswala paricharya. No matter of which prakruti you are, you can't say I can't follow this because I am of this prakruti. Because that is the regime, that is paricharya. So it is designed in the way it is helpful for everyone, right? Like some dravyas that is nitya upyogi dravya, it can be had by anyone. Okay. So similarly, when the Sutika Paricharya or Paricharya while Garbhini Paricharya, it is designed in the way no matter which Prakriti you belong to, you can follow that, you have to follow that for better results. So if it is said very vaguely, Madhur Aushad Siddha Tela, whatever is available in which area you can use. So, but this study was found in regard of Narayan Tela, Anuvasan Basti, so it's also a good option. We can also is Bala Taila. In this, when the Avastha Visheshas, it is a Paricharya form. Obviously, we can use any Madhur Aushad Siddha Taila. Bala Tel, we can use any Madhur Aushad Tel. Yashti Tel, people use, so that's fine. So in short, we can conclude that Narayan Tela is a Bruhan category, Vatshaman oil used in infertility with apatarpan janya hetus, especially long driving hours, maybe long chronic secondary diseases, etc. So next is Jivantyadi Anuvasan Basti. So this Basti I got from Charak Siddhisan 5, where maximum of the Anuvasan Bastis are explained. So mostly the dravyas which you see is all the Jivaniya Gada dravyas are used, and Tela, Grutak, Shira, all three. I mean, Tel, Grut and Shira, all three Bruhan category Drava Dravya are used for its Siddhi. So let's directly go for its Falashruti, that is Bruhanam. So obviously they have given us a idea that it's a Bruhan category oil, Vata Pittagnam. Very good. They have even stated the Doshagnatva. Never tell me, never ask me that will we use it in Kaf Pradhan Samprapti. Obviously, no matter Kaf Pradhan Samprapti with low ET is coming to you, please don't use this, because only to increase the ET, if you are endometrium thickness, if you are using this, it won't increase. See, if it would have been so easy to practice, then there are so many articles, and reading the articles, reading the success stories, anyone would have become an Ayurvedic gynecologist. It is not that easy. So if someone asked me on call, what can I give for increasing the endometrium thickness? If I said Jivantyadi Anuvasan works well, what if the patient was of Kaf Pradhan Samprapti, Avranjanya Samprapti? The patient will land up in hell and never the ET will increase. Okay. So the condition itself stays Bruhan, Vatapittagnam, Bala, Shukra, Agni, Vardhana, Mutra, Reto, Rajo, Doshan, Hare, Tad, Anuvasana. So Mutra, Reto, Rajo, Doshan. Rajo, Doshan of Vata Pitta category. Okay, if you ask me that a young girl of Vata Pitta dominancy Raja Dushti is there, and there is nothing like for fertility she's trying, she just wants a regular period because her periods are maybe painful or delayed. Obviously, you can use Jivantyadi Anuvasan. Okay, so try to understand, try to analyze the bastis in our terms so you can pinpointly at least administer those bastis. It is beautifully written. Just we need to both. We all know all these bastis. I am sure everyone has used these bastis in their practice. The only thing is, let's just define or underline their borders. So it is a Pittagna Anuvasan. So can be used in Pitta Rakta dominant condition. Why I said Pittagna Anuvasan? Because it is in that context. So reference is also important. I'm just picking up a basti and presenting your no sense. So Pittagna Anuvasan basti. So Pitta dominancy with Raktaha condition we can use. And there is a Rakta Dushti due to Pitta Prakopaha and Pitta Adhika Lakshana. Just um, when Pitta Adhika Lakshanaha like vomiting, burning, anger issues are present before or during the menses. So we have a lot many complaints of patients that during the menstrual cycle or during the periods are going, they are having a lot of complaints of maybe vomiting, burning sensation in the vagina, and in the hands, legs. Anger issues are there before and during the menses. White discharge, vaginal itching, typical pitta rakta prakruti patients. Okay, pitta rakta prakruti patients or a patient of maybe 18 to 22 years. You can imagine a girl having
a college going girl having many things of pitta and rakta dushti karaha. In that condition, if she is having a PMS all related to pitta dominances, obviously Jivantyadi Anuvasan will work the best. And there is a history of past exposure to jaundice, chickenpox, chikungunya, high grade fever. Why this is very important? Because it clearly says Bala Shukra Agni Vardhanam. And if you see the Chikitsa of Jwaraha, at the end, when there is the Agni Kshinata due to the Dosha Dorbalya, what we do is Agni Vardhana, that also with the Ahadravya, and even the Anuvasan Basti stage in the Jwara is the same. Okay, so this is very important because all these conditions, jaundice, chickenpox, chikungunya, high grade fever, all are the grades of fever that are more pitta and rakta dominancy. With patients with heavy menstrual cycles or with history of heavy cycles previously and then followed by scanty menses. So this is a very typically observed picture that patient complains that I was having previously heavy cycles of 7 days, 8 days, and nowadays I'm just having cycle of 2, 3 days. But pain is there, and other symptoms related to pitta adhikya is there. Why these conditions happen? Let me explain you. This beautiful explanation is given in Pandu and Kamala Chikitsa, that when for example, if you try to heat a bowl of rice, okay, first what happens? Klinnata comes and then rice cooks. If you overcook it because of pitta dushti, then what happens? The water evaporates and it tries to get dry and scanty. Okay, so this is exactly the condition which happens here. Okay, screen. Is my screen visible? I am unable to see. Yes, visible. Okay. It's visible. Okay, just Jivantyadi, but it is Jivantyadi Anuvasan Basti, not mood. just a minute. Yeah. Okay. Did the screen change Udumbaradi Tel? Yeah, change. Yes, thank you. Sorry. So fine. The next oil is Udumbaradi Tel. So I'm not concentrating on only Vatadikya, Pittadikya. I'm trying to cover almost all topics. So this is something different, Udumbaradi Tel, which is actually shown in Kapradhan Avastha. So the reference is Yoni Vyapada itself. Kashaya Madhur Pradhan Dravyas are used in the Udumbaradi oil. So properties of this oil, if you go through the content, it is all Ruksha, Laghu, Shoshanaha and Vishuddhikarana, that is cleaning properties. Okay. So and the indication also says Pichilaha, Vivruta, Kaladushta, Yonishta Daruna, Saptahat Shuddhyatim, Apatyam cha api Vindati. See, what we do is many times, obviously, if we are all gynec practitioner, many times senior Vaidya always do the yoni parikshana before going for treatment of any fertility issues or maybe any long-term chronic gynecological disorders also. Okay, so this shuddha yoni concept is very important in our principle, because Charaka also says that if the yoni is shuddha, then there is no possibility that there is no fertility issues. Okay, so yoni shuddhikaran is very important. Everywhere after panchkarma it is written after yoni shuddhi the garbha dharana happens. Okay, so in that case this udumbaradi tela, it is specifically used when there is a kapha dominancy avastha, pichila, vibruta, sticky discharges, or maybe vaginal discharge, heavy, chronic. Maybe there is inflammation because of kala dushta yoni, means there is a chronicity in the avastha. So avastha condition kapha dominancy avastha with the hetus or typical hetus. Patient is stool, fat, likes all madhura dravyas, can have curd, a lot of curd, ice cream, milk products. There is avyayam, kapha,
as well as Medodushti is there. History of Prameha may be there in the family. All this condition leading to chronicity, and there are vaginal continuous complaints like maybe discharge, maybe dryness, maybe itching, maybe foul smelling. So this is a typical condition where the Udumbaradi tel is used. It is a typical Kashaya Pradhan tel. So if you use in Vata Pradhan Avastha, you will end up in hell. Okay. So the only condition it is a Kashaya Madhur Pradhan Telaha if the typical Hetu is present, if examination shows that there is a typical curdy, heavy, white discharge, you can surely use this. And obviously, the shloka itself says the apatyam chapi vindati. So after yoni shuddhi, apatyam chapi vindati. Okay. So vaginal discharges, recurrent infections leading to inflammation, itching, discomfort, and infertility due to vaginal factor. See, we all have learned that there are many factors: ovulatory, tubal, vaginal factor. What Ayurveda says is this is a typical, as a perfect example of that. Okay. Anuasanas, these were what I tried to mention in detail. Few more are there, but I have just mentioned the shlokas. Just we will go through it to know how can we define the avastha. So Baladi Yamak Anuasan, it is also given in Charak Samhita. So Tena Sri Shatam Gachet na cha atra astehi vihara ahara yantrana kvachit eshah vrushyo पल्यो बृहण आयुष्य वलिपलित नुत शतक्षीण नष्ट शुक्र विषम ज्वर आर्तानाम व्यापन्न योनिनाम च पथ्यतमः. See, whenever these shlokas, why I have quoted them and why I just didn't wrote them in English is, it is each word is so beautifully written. Nashta Shukra. And in the cases of Nashta Artavaha also you can use. Vali Palita Nut is not only just wrinkles, it shows the avastha of patient. Okay, that it helps to manage the Jara avastha. When we say we have a Jara Chikitsa, what you use in Jara Chikitsa? You can always not use the tonics or Rasayan. Okay, so Baladi Yama, whenever these words are used, it itself has the property of Rasayana Guna in that. Okay, so Vrishya and Rasayan Anuvasan is Baladi Anuvasan. Very, very beautiful. We can use it very easily. Nashta Shukra, Vishama Jor Artana, Vyapanna Yonina. Vyapanna Yoni word is written, so I'm emphasizing or I have involved this in gynecological disorders because nowadays people trying for IVF with a higher age factor, maybe after 35, 36. In that case, when already scanty menses or already AMH is low and patient is expecting a baby as well as Rasayan Gun along with it, this can be beautifully used. Next tail, which is Lashun Tela, typically Kashyap Samhita, Nirman Vidhi and everything is written. Kliba Bandya Ati Vruddhan Api Virya Praja Pradam. So, when people ask me what to do when AMH is reduced, tell me what should I tell? Should I tell Baladi Yamak or should I tell Lashun Tel? You are the best one to decide which will work the best. Okay, because it is beautifully written Ati Vruddhan Api Virya Praja Pradam. So, it has its potency is the thought process is till then that if patient of 35 above is coming to you, do we have any options? Yes, we do have. We don't have to follow people saying yes. If they are saying yes, if they are saying no, then no. Obviously, we have to go through the reports, we have to go through everything, but you need to have your own conclusions. Okay. So, Madhukadi Anuvasan, the another one given in Sushu Chikitsa, it says Daha Asruk Visarpa Vata Shonita Vidradin Pitta Rakta Jwara Adayasha Hanyat Pitta Krutan Gadan. It is also a very good one for Pitta and Rakta Dushti Samprapti, and especially patients of Asruk Daraha or patient having a overall dominancy of excess of discharges, excess vaginal discharge, excess of blood loss, or maybe you can say history of abortions in maybe first month itself. Okay, means 4 5 days, or you can say a patient with chronic history of heavy menses. So patient don't come to you saying that she's having pradhan. But when you take the history and patient says I'm having 8 to 10 days of menstrual cycle regularly, it means she is towards
more of a pradaraha. Okay, not at least during while selecting the drugs, you need to keep in mind that somewhere this samprapti or this category is there in that patient. One more important reference is in Sushrut Samhita in Chikitsa Sanven. Sushrut has mentioned two adhyas for Anuasana and Niruha Basti. Vandhanam Shatapakena Shodhitanam Yathakramam Balatein Tailena Deya Syu Bastayasya Traivruteina Cha. So I have written two sloks together. Sorry for that. Vandhyanam Shatapakina Shodhitanam Yathakrama. After Shodhanaha, Shatapaki Shatapaki Tela Bala Tailena is useful. So what is my concept of multiple times when one thing is pachan ya pak is done of a single drug multiple times. Okay, so dhatu gamitva or its depth needs to be understood or it is increased, like rasa, rakta, mausa, meda, asti, manja, shukra. Obviously, as krushnata increases, when shatapaki Tela, Shatapaki Ghuruta, Shatapaki or Shataputi Rasabhasmas are done, the indication or the use behind that is to increase its dhatu gamitva to paramparam ya uttarottar dhatu, means towards Shukra, towards more Sarosar Dhatu. Because Shatapaka means the Saratva is best in that content. So this is very important reference, that is Vandhya Chikitsa Shatapaki oils need to be added in our practice. Okay, so you Bastaya Trivruteina Cha. This is for relation of Trivrut. Trivrut means in year 3, Grutataila and Vasa, and Balatela Shatapaki. So both the good references given. So accordingly, we can imagine the Shatapaki tails should be used more and more. Okay. So another Shatavari Anuvasan Basti Vyapanna Yoni Nam वंध्यानाम रक्त गुल्मिनीनाम मृत अपत्यानां आर्तवानां च स्त्रीणां क्षीण मांस रुधिराणां पत्यतमं रसायनम उत्तम वलिपलितनाशनम विद्यात्. Okay, so very less bastis have this typical word of mrutta apatya anartavanam. Okay, so people with bad obstetric history, having one or two abortions, having stillbirths, rakta gulmininam is also there, and vandhyanam. Okay, so beautifully designed Falashruti. When I'm saying these things, I just hope that you have uh, your patients or your avastha clear in your mind that which to be fit where. So the next is Niruha. Let's move to Niruha now. We have seen a lot of Anuasanas. So Niruha also plays a very, very, very important role. More than Anuasana, Niruha plays more role. Okay, so here I have put on few Niruhas, few Yapanas. So the first one is Palashadi Niruha. It is in Charak Siddhi. Why I have put this first, because minimal amount of dravyas are there. If you see only Palash Kvat, only Shatpushpa Pipli Vachakalka, and Avastha is also very underlined. Anaha, Parshvamaya, Yoni Doshan, Gulman, Udavarta, Rujamcha Hanyat. So typical avastha of dysmenorrhea, PCO, delayed menses, painful menses, PMS related conditions before menses. Beautifully, Anaha, Pashvamayaha, and Udavarta itself says in the avastha of Urdhva when Anulomana is expected, it has gamitva towards Yoni, because the shloka itself says Yoni dosha Rujam cha Hanyan. So if you have patient having complaints of dysmenorrhea, PCO, delayed menses, young patient, nothing more related to Vandhyatva or fertility, not expecting, but just want to regularize the period, you can surely use Palashadi Niruha. Very easy to use, very typical and beautiful indicated. So next is Rasayan Basti. So I would like to mention one thing. This Rasayan Basti is less used, but I would like to thank my guide, Dr. Shilpa Dunga ma'am. This is from the Navnath Nitikam book, which I could find in Jamnagar. I couldn't read that book again because I couldn't find it anywhere.
But by God's grace, I have just image of this Rasayan Basti. It is a very good patha or combination. So tulyam madhucha tailam cha rasna tabhyam samam bhavet. So in this, if you have observed one thing, that similar basti with the name of Madhu Tailik is in Charak. But only difference is here Kwatha is of Rasna and there Kwatha is of Erindamulaha. Madhu and Tail are in equal quantity. Kalka is Shatpushpa, Pipli and Vacha in Charak, and in Rasayan Basti it is Yashti Madhu. So only a difference of 2-3 drugs very easily available. And if you go through its indication, Eshah Rasayanoho Basti, Balyo, Bruhana Deepana, Vrusho, Tata Shukralashtra, Chayapano Nirupadravaha. Gada Wind Mutra Krushrani, Gulma Meha Arsha Bradnanuth. So what it says, it is so beautiful, only few drugs. It has Rasayan properties. It is Bruhan as well as Deepan. It is Vrushya, Shukran, Yapana, Nirupadravaha. Yapan as well as with Nirupadravaha, and a typical in which avastha it is Gard, Vidmutra, Kruchrani. So the patient having a Jirna Malabaddhata or complaints of long term of constipation. Okay. And Gulma Meha Arsha Pradhanut. Okay. So upon Daurbalya, constipation, Arsha, patients expecting for fertility, this is best used. Okay, with a minimal amount, quantity of dravyas. Okay, so avastha is Rasayan, Balya, Bruhan, Deepan, Vrishya, Shukra, Gulma, Arsha, long-standing history of Malabaddhata or Apana Pradesh Dushti. Sthan Dushti of Apan and guard with Mutra Kruchani. Okay, so this was a Rasayan Basti, almost like Charakaha Madhu Telik Basti. Mother tail is an equal and more quantity. Just the only difference is that it is having Rasna Kwataha and Charaka Samhita has explained Irandamula Kwata. And that in that Irandamula Kwata Basti, you won't get a single word related to Yoni or related to Vrishya or related to in gynecological disorders. Okay, so that is for Madhutelik, which is to be used in Yukta Ratha Basti or Madhutelik, a patient having Nirupadrava, Yapanaha, that type of. Just changing these ravyas will give you these benefits. So next is, what is the importance of Vyapana Basti in infertility? If you go through infertility cases, so I was just thinking that why Vyapana is more, all my seniors used to, all my gurus, seniors, they used to more promote for Yapana or used to always use Yapana rather than Niruha. So I got to know this from this shloka is from Charak Siddhi. So Narinam aprajatanam, Naranam chapi apatyada, उभय अर्थ करो दृष्टा स्नेह बस्ते निरुभय. When in Nari Aprajata means expecting from Praja Nari, and Nara who is expecting from Apatyada, Ubhaya Arthakrut, doing action of both, in that case Yapana is more useful. So Sneha Basti Niruhayoho Ubhaya Arthakari is Yapan Basti. Okay. So that's why Yapana is used more in infertility. So are all our favorite Mustadi Yapan. See, I know Dravya collection of Mustadi Yapan is too many. Okay, but it's obviously it's Falashruti and its extended extents is also the same. So I haven't mentioned all the content. Just Sheer and Mausras as well is used in this Basti. So Shukra Mausa Bala Janana. Okay, but I would like to take 1 minute focusing on this mouse sabala. What happens? Garbhashaya itself is a mouse avya. Okay, so whenever there is a mouse avya mouse dhatu dushti is present, and there is a any complaint relating to yoni vyapat or gynecological issues, or maybe you can say mouse is weak or poor in that patient, and patient is having complaints of recurrent abortions. In that case, we need to focus on Mausabala. Okay. So in that case, Mustadi happen directly have a reference of Shukra Mausabala Janana, Shatakshina, Kasa, Gulma, Shula, Vishama Jora, Bradna, Pukshi Shula, Asrukjo means Asrukdara,
वातरक्त पित्त श्लेष्म व्याधि हर सद्यो बल जननो रसायनश्च इति. So when we get to know, when we try to analyze the what we can say dosha sangraha, vatarakta pitta. Okay, so Vat Pitta Kapha as well as Raktaha, when this is the condition, it means Tridosha or Sanipati condition along with Rakta Dushti. Rasayan karma is expected, Mausa bal is hampered, Satyo bala janana rasayan is mustadiyapa. Okay, it is very beautifully used in many of our practices. So Avastha Vishesh is Rasayan karma, when the Rugna is Sheena or maybe Vyadhi Pidita, you can say. व्याधि पीड़ित हाँ त्रिदोष अवस्था प्लस रक्त दुष्टि दीर्घकाल व्याधि पीड़ित leads to shukra and mausa dhatu related issues. Infertility due to sthana dushti because kukshi or garbhashay vikruti like endometriosis, shoth, inflammation and heavy bleeding. In these cases, after shuddhi, you can use a mustadi yapan basti. And obviously low reserves because it is a rasayan. Okay. So next is Erenda Muladi Niruha. Many times we used to get very confused when we can use mustad, when we can use niruha. So in pre-conception care, when the patient is coming to you, there is no age is not too much. There is no actually bala kshina in that patient, but patient is expecting a baby and uh, she is she has approached you for a pre-conception care. In that case, this is the best niruha which you can use because the shloka itself says apatya kamanam. Kamanam means expecting, ichha. Okay, kamana of that thing is if it is there, you can use. So sarvesham prashasto visheshto lalita sukumaroh sri viharashina shatasthvira chira arshasam apatya kamanam. Pataha dravyas are there in Erenda Mula Niruha. Erenda Mul, Lagu Panchamul, these dravyas are there. Few of the Devadara and those are there. And Shira Pak is there. It is not a mouse pak. There is no mouse ras in this basti. When there is a mouse ras, you need to increase Shukra Mausa Balavardhan, shift to Mustadi. If there is only preconception, patient is between 30-35, not very sheen, has just started for, have thought of just going for conception, it is in the, she or he is in a preconception phase, go for Irandamuladi Niruha. Madhugrita Taila Saindav as in other bastis. Apatya Kamana ideal to be used in cases of preconception care, specifically with patients of history of Shatakshinaha, Aghata or long-term Arsha, piles, constipation, Jina Malbadhata. Why I need to focus this, because nowadays in practice, if you asked about malabadhata constipation, out of 150% patients is that it is that it's fine, it is not satisfactory, and we get constipated on and off. So that is not a disease for a patient as of now, but while case taking, you have to mention that the tendency is of constipation malabadhata. Okay. So the next and most important, our favorite topic, Uttar Basti. So the third type of Basti. So Garbham Yoni Sadashigram Jite Grunnati Marute. Basti Jeshu Vikareshu Yoni Vipransha Jeshu Cha Yoni Shuleshu Tivreshu Yoni Vyapat Asrugdare. Tell me, there is no Vandya word in this. And what we think is Uttar Basti is one short solution for all infertility cases. So it is not the seed. You need to understand. Sometimes if you have your analysis of your case so pinpoint, only Matra Basta will also work. Because everyone has its own area of working. Okay. So Shigram Jite Grunnati Marute. So the Samprapti Vishesh is when Garbha means in Garbhashaya. Okay. Or Yoni, if there is a Maruta present in Yoni Bhag and you need to win that Maruta, Shigram Jite Grunnati Marute. Basti Jeshu Vikareshu, Yoni Vibhramsha Jeshu Cha. We have, I don't think so. I mean, I'm sorry to define it, but I have been not used for patient of prolapse, Uttar Basti. But the first indication itself is Yoni Vibhramsha Jeshu Cha, Yoni Shuleshu, Tivreshu, Yoni Vyapat Asrugdare. So, see, there is Yoni Vyapat. Obviously, Yoni Vyapat leads to Vandhyatva. But as such, what we have studied now, many bastis are directly saying Vandhyam Chapi Garbham, Vandhyam Chapi Apatyada.
This says that it is in a vikareshu condition. Okay, tivreshu, vikareshu. In that all conditions, we have to use Uttar Basti. Even Asrukdara, as of now, there are less practitioners who are using it for Asrukdara also. Thinking, why we are not using, because even we think Asrukdara, hardly that bleeding has stopped because of a medicine. If you do Uttar Basti, again bleeding will start. Because we are not confident that obviously if we give Udambar Adi Uttar Basti, if we give good kashaya rasatmak Uttar Basti, if the cases of shayatmak pradar, and we give Balatil Uttar Basti, it won't. Okay. So it is all about maybe in few years we will have that confidence. I will have that confidence. So Yoni Vibhransha, Shula, Vyapat, and Asrukdhara. Avastha Vishesh is Ashaya Bala Vruddhi is expected. See, you try to understand Ashaya Bal is hampered with what? If patient has undergone recurrent curetins, okay, if patient has undergone maybe Shar Karma, maybe radiations, or maybe you can say many treatment on yoni itself. Okay, in that case, Ashaya Bal Vruddhi is expected. For example, I had one patient having had undergone vaginoplasty. In that, even after vaginoplasty, that Ashaya needs to be Bruhan is expected of Balavardhana of that Yoni Asha is expected. Okay, so in that condition, Uttar Basti fits best. Asha Shuddhi plus Balavruddhi. This reference I forgot to mention the quote, but Uttar Basti have dual action. It is not only always Balavruddhi, Asha Shuddhi as well as Balavruddhi. So, for Uttar Basti, let's see what we have to use, Ghruta or Taila. So, this is not what I have. It is not my thinking. It is directly reference from Charak Samhita, that Pitta Rakta dominance condition. काश्मरी कुटेच्या क्वाथ सिद्ध उत्तर बस्तीनाम रक्तयोनी अरजस्कानाम पुत्रग्नाच्या हितम घृतम. So Kashmiri Kutaja Kwat Siddha Ghruta Uttar Basti in Raktayoni, Arajaska and Putragna. So in this three condition, Raktayoni, Arajaska and Putragna, Hitam Ghrutam. Ghrutam is important. Another condition when Uttar Basti straightforwardly indicated is Karinininam Acharanam Shushka Yoni Prakcharana Sucha Kafavate cha Datavyam Tailam Uttara Bastinam. In the conditions of Kaphavata dominancy, Uttar Basti should be given with Taila. Okay. In Rakta Yoni Arajaskana Putragnashahita Grutam. So Gruta is used. In Kaphavata Chadatavyam, in Kaphavata dominant situation like Karanini. Karanini means, for now we can say that when the Mukha is small, Acharana, Shushka Yoni or Prakcharana. In that conditions, Taila should be used. And one more, Trevrut Sneha, it is given in three conditions. That is Udavarta Yoni, Mahayoni, Srasta Yoni, and Sannipati condition. As I said, when there is a patient of uterine prolapse, Mahayoni condition, Trevrut Sneha Uttar Basti is directly given in our classics. So in Udavarta condition, like in Uttar Basti indication, we have seen Shula Pradhana. Okay, Shuleshu. Udavarta is a condition of Shula Pradhana. So Udavarta Yoni, Mahayoni, Strasta Yoni, Sroni, which has moved from its own place. Sannipati condition, Tridosh Pradhan Samprapti, Daruna Vyadhi. Okay, chronic conditions and Vandhyatva, Trivrut Sneha is used. Trivrut means Gruta, Taila and Vasa. Combination of three Sneha. So what are the Uttar Bastis which we can use? Jivaniya Siddha Tela, Kashmari Gruta, Phala Gruta, Kalyana Gruta, Dhatakyadi Tela. So these all we can use. So just as now, this was what I studied. This is for you all. You may study. I have given the references. These all Anuvasana and Niruhas are given in our classics, which all has something related to Vrishya, Yoni Vyapadaha, Asrukdaraha, Rajodoshaha, everything, maybe one or two words, but it is surely there in these few bastis. Okay, I have just jot down few of the names with the references. Surely, if you like the way which I tried to explain, you just go, you can read them, and I just wish everyone has their own notes of this. So this was all what I could put up on the table.
जी, thank you. It was really a very good collection and very good way to explain the topic. Since long people were telling me that मैडम थोड़ा सा बस्ती का बता दीजिए, बस्ती वाला लेक्चर रखवा दीजिए, कैसे कौन सी बस्ती किस में दी जाती है, हमें कैसे डिसाइड करना है. But you have, I think, satisfied everyone that which basti should be used in which disease. That is a big misconception in all the practitioners or students, that how to decide. And you have given the way, or we have given the idea to all those how to select the basti, uh, and which basti should be given in which conditions. So if there will be questions, we will take up, and then we will have some Sure, ma'am. expert Yes. points from the other experts who want to add upon in this. Yeah, anyone want to ask the question can put up the questions. अंजना मैडम कुछ बोलेंगे इसमें आप? जी मैडम, अंजना मैडम नमस्कार मैडम। जी जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी मैडम। जी रियली मैम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया गया। और इतना इन्होंने, स्पेशली जो सबसे अच्छी बात थी कि शास्त्रोक्त था, क्योंकि जहाँ हाँ जहाँ कश्यप कश्यप संहिता से लेके, चरक से लेके, सुश्रु से लेके जहाँ तक हो हाँ सकता था, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ किया। जी जी प्रैक्टिकल जी अप्रोच बिल्कुल। में बहुत अच्छा इन्होंने किया। और अच्छा लगा हमें इसलिए और भी, क्योंकि नारायण तेल पे मैंने भी यहाँ पे थीसिस कराई है, अभी थीसिस जमा कराई है नारायण तेल पे। और इसके अलावा जैसे शतपुष्पा वगैरह पे भी काम चल रहा है, शतपुष्पा तेल पे भी मैंने बहुत अच्छे से काम करा चुकी हूँ मैं। और विष्णु तेल, इस तरह से हमने भी कुछ जो शास्त्रोक्त तेल है उस पे काम हो रहा है। लेकिन जो मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, सारी चीजें इन्होंने इतनी क्लियर की कि कहाँ अनुवासन, निरहु, और साथ में जो है थोड़ा सा मात्रा अवस्थी के बारे में कुछ और मैटर मिलता तो और मजा आता, कि कुछ कहीं एक छोटा सा रह गया, क्योंकि मात्रा अवस्थी आजकल एज ए ओपीडी पेशेंट में बहुत कॉमन हो गया है। पेशेंट को थोड़ा सा ये होता है कि हमें आना है और तुरंत जाना है, तो उसमें हम लोग क्योंकि ये शॉर्ट प्रोसीजर होता है मात्रा बस्ती का, तो उस पे भी अगर मैडम थोड़ी सी लाइट डालती तो मजा आता। लेकिन ठीक है, बोल देते नेक्स्ट टाइम हैं, मैडम, बोल नेक्स्ट देते टाइम हैं, के लिए थोड़ा सा रखिए बता जी। देगी, अभी बता देगी। जी और जी मैडम जी थोड़ा जी, आप बता विष्णु देंगे तेल तो के अच्छा बारे रहेगा। में बता दीजिए, थोड़ा सा विष्णु तेल का आपका एक्सपीरियंस है तो। नमस्ते एक्चुअली, हाँ मैम। बताइए मैडम। जी हाँ, मात्रा बस्ती जैसे ऑयल या कैसे सिलेक्ट करना है, वो तो हम अनुआसन के ही इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। मात्रा बस्ती का जैसे क्वांटिटी एक्सपेक्ट होता है, लोग 60 या 80 ml जो डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिस में देते हैं, उसी तरीके से दे सकते हैं। मैं ऐसे समझती हूँ कि जब भी वात पित्त डोमिनेंसी कंडीशन होती है ज्यादा, और जिसमें हम कह सकते हैं कि हमें पुष्टि ज्यादा एक्सपेक्टेड है रस रक्त की, उस कंडीशन में ये ज्यादा यूजफुल होता है। बहुत क्रॉनिक कंडीशन में सिर्फ मात्रा बस्ती से रिजल्ट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इज, जब भी स्नेह इज एक्सपेक्टेड, लाइक स्नेह पान भी बहुत जन करवाते हैं फॉर फर्टिलिटी, तो 20 ml 30 ml, जिस वंडरफुली वो वर्क करता है, उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि मात्रा बस्ती वर्क करेगी। लेकिन इन दैट केस वृक्ष प्रधान संप्राप्ति वात डोमिनेंसी कंडीशन में ही आपको ज्यादा, या क्रॉनिसिटी है, मतलब वात कंडीशन है, ट्रैवलिंग ज्यादा किया है, और इस तरीके से होके फिर डिस्मेनोरिया है, सो इट वर्क्स वेल। बाकी तेल कॉम्बिनेशन व्हाट वी कैन यूज इज अनुवासना में जो हमने दशमूल है, नारायण तेल है, ऑयल कॉम्बिनेशन उसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मात्रा बस्ती का समटाइम्स हम लोग 30 ml से भी स्टार्ट करते हैं ना, मिनिमम डोज से भी कभी कुछ कर पेशेंट्स में। सकते हैं, राइट। हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, मिनिमम डोज से हम स्टार्ट कर देते हैं, एंड फिर धीरे धीरे उसका इंक्रीजिंग जैसे मैनर रहता है वैसे भी कर सकते हैं। वो भी एक तरीका अच्छा रहता है कि हम पेशेंट्स में मतलब टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं और कर सकते हैं। मतलब ऐसा पेशेंट्स में मैं जहाँ मतलब मैं करती हूँ वो मैं बता यस। रही हूँ कि हम ऐसे कर सकते हैं। Anybody else want to add anything in that or ask the questions? मैम, एडिनोमायोसिस के केसेस में हम कौन सा बस्ती दे सकते हैं? हाँ जल्पा। Yes, ma'am. Good question. Adenomyosis usually it is a case of Shotha Pradhan या वातक कफ डोमिनेंसी अगर केस हो,
पेशेंट स्थौल्य है, अगर उसके हेतु उस तरीके से हो, तो मैं यूजुअली दशमूल कंटेंट रहने वाला बस्ती निरूह में भी और अनुवासन में भी ऑप्ट करती हूँ, बिकॉज इट हैज ड्यूल एक्शन। शूल भी मैनेज करना उतना इम्पोर्टेंट है, और एज वेल एज इन्फ्लेमेशन भी। तो जब भी शोथ प्रधान इन अपाना कक्ष इस तरीके से जब होता है, तो हाँ, मैं वो यूज करती हूँ। तो जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में नहीं था, द्विपंचमूल आदि जो चरक का बस्ती है, मे बी यू कैन रीड इट इन चरक संहिता डायरेक्टली, सिद्धि 3 में है। तो द्विपंचमूल आदि फर्स्ट ही जो उन्होंने निरूह दिया है, उसमें दशमूल जमीन कंटेंट। ओके, सो वो मैं यूज करती हूँ एज अ निरूह, और अनुवासन में दशमूल आई प्रेफर। बेसिकली दशमूल इटसेल्फ इज अ वात कफग्न एंड फिट कंडीशन होता है वो एंडोमेट्रियोसिस का या एडिनोमायोसिस का। मतलब और उसका पित्त प्रधान हाँ। संतति तो सॉरी। मैम पित्त प्रधान वात प्रधान पित्त ऐसी संप्राप्ति रहे तो भी दशमूल हम यूज कर सकते हैं। अगर शोथ हो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर यू कैन ऑफर एरंडमूल आदि, उसमें लघु पंचमूल है। ठीक है, उसमें लघु हाँ पंचमूल है, हाँ। और अश्रुगधर का भी उसमें वर्ड यूज आया है। तो इन दैट केस यू कैन देन ऑप्ट फॉर एरंडमूल आदि, बिकॉज उसमें लघु पंचमूल है, और लघु पंचमूल इटसेल्फ इज वात पित्तग्न, दैट्स व्हाई। ओके, राइट, थैंक यू। इसमें एक्चुअली अनुलोमन ही चाहिए रहता है ना, हम्म। कि प्रतिलोम हुआ है तो उसका अनुलोमन करना है, ठीक है ना। तो बस्ती से अनुलोमन तो होगा ही होगा। जल्पा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेखन बस्ती? यू हैव नॉट मेंशन, आई थिंक। हाँ हाँ, दैट इज रिमेनिंग। या सो व्हेन लेखन बस्ती से बहुत स्पेसिफिक कंडीशन होती है। जैसे मेद दृष्टि के हेतु लेके जब पेशेंट आते हैं, मे बी कंडीशंस जब भी sudden weight gain after any operation, because शस्त्रशारग्नि कर्म is itself a हेतु of मेददुष्टि। सो जब भी पेशेंट बोलते हैं कि ये ऑपरेशन के बाद वेट बढ़ा है, मे बी सीजर हो या कोई दूसरा भी ऑर्गन का ऑपरेशन हो, और मेददुष्टि पाई गई है, इन दैट कंडीशन आई प्रेफर फॉर लेखन बस्ती, along with that for patients of obese PCO, because meda kapha, this combination is also seen typically in cellular PCO conditions. And the that's it. Meda kapha dushti plus obese PCO. So this is a very specific avastha which I use for Lekhan Basti. नहीं, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, ये सारे ग्रोथ डिसऑर्डर्स है, तो उसमें काफी लोग हाँ, इनमें भी लेखन तो बस्ती हाँ, दे रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, यस मैम। सो फाइब्रॉइड में अगर देर आर टू टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, लाइक कुछ लोगों को वो फाइब्रॉइड के पोजीशन की वजह से ब्लीडिंग हैवी होता है, उन पेशेंट्स को मैं लेखन बस्ती जस्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइब्रॉइड नहीं देती हूँ। इन दैट केस मैं उनको कफग्न तक ही लिमिटेड रखती हूँ, मतलब शोथग्न कफग्न तक का। लेकिन अगर टिपिकल कफर में तो दृष्टि से ही फाइब्रॉइड है पेशेंट को, तो फिर वी कैन blindly use लेखन बस्ती फॉर फाइब्रॉइड, वी कैन से, या वी कैन से जस्ट बल्कि यूटेरस है, या मे बी एडिनोमा, ऐसे एंडोमेट्रिस द पिक्चर इज ऑफ बल्कि यूटेरस, एंड द पेशेंट इज कफा मेदा दुष्टि वात प्रधान, दैट वे वी कैन यूज। लेकिन फाइब्रॉइड में इफ देर इज अ फाइब्रॉइड along with heavy bleeding like अश्रुगधर, तो थोड़ा सा लेखन बस्ती के लिए वी हैव टू थिंक ट्वाइस। क्योंकि जनरली अभी क्वेश्चन एडिनोमायोसिस का है ना, तो मुझे याद आया कि लेखन बस्ती भी काफी लोग यूज कर रहे हैं अच्छा। एडिनोमायोसिस में, यूट्राइन फाइब्रॉइड में। दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन प्रेजेंटेशन, सो मुझे याद आया कि हाँ, लेखन बस्ती पे भी थोड़ा डिस्कशन जो है वो होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और भी है इसमें कि सजेस्ट द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर यूट्राइन एडिनोमायोसिस टाइप 4 फाइब्रॉइड। तो सेम वही है कि फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस है, ग्रोथ डिसऑर्डर्स है, तो मेददुष्टि है, पृथ्वी का स्थान है ना, पार्थिव महाभूत है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू सिलेक्ट दी बस्ती। योग बस्ती भी हम करा सकते हैं, तो उस पे थोड़ा सा तुम बोल सकते हो कि हाँ, अगर ऐसा केस है तो क्या करना चाहिए। हाँ, ज्योति जी, हाँ, नमस्ते डॉक्टर ज्योति। या सो यूट्राइन एडिनोमायोसिस विद टाइप 4 फाइब्रॉइड, वी कैन
जैसे मैम ने भी अच्छे से इन मतलब लेखन बस्ती ये टॉपिक निकला ही है, तो विल जस्ट ब्रश अप दैट। तो इस केस में आप केस टेकिंग में अगर पेशेंट को ये एडिनोमाइसिस इट इज अ सेकेंडरी कंडीशन, लाइक आफ्टर 35-40 पेशेंट को डेवलप होती है। तो ऐसे केसेस में बहुत बार जैसे मैंने बोला कि कफ दोष्टि के हेतु प्रेजेंट हो गए, और प्लस कफकर आहार भी होगा, स्थूल भी होगा, और कैसा है कि हर पेशेंट ऑफ फाइब्रोइड डोंट ब्लीड टू मच, तो उसमें लेखन बस्ते विल फिट बेस्ट। एंड इफ नॉट इन दैट केस, तो द्विपंचमूलादि है या फिर एरंडमूलादि निरूह है, वो केसेस आप ज्यादा सिलेक्ट कीजिए। लेकिन अगेन आई विल से दैट यूट्राइन एडिनोमाइसिस विद फाइब्रॉइड, इसमें यापन कैटेगरी ज्यादा यूज करना, क्योंकि यापन में क्या होता है कि रिस्क थोड़ा कम होता है। बिकॉज इन दीज पेशेंट कभी कभी होता है कि 15-20 दिन ब्लीडिंग चालू रहती है, 15-20 दिन कम होती है, हमारे हाथ में होता है बीच के 15-20 दिन व्हेन वी हैव टू गिव द बस्ती एंड एवरीथिंग। सो टू मैनेज दैट सिचुएशन, अभी जैसे मैंने कहा एरंडमूलादि निरूह है, वो भी एक्चुअली यापन कैटेगरी में है, एरंडमूलादि यापन निरूह है। तो वो बहुत ब्रूहण भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो ब्रूहण दीपन इस तरीके का है, और प्लस वो शोथग्न अनुलोमन शोधक है। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो बस्ती, और जस्ट गो थ्रू इट, कौन से कैटेगरी में फिट कर रहे हैं। अगर सिर्फ ब्रॉडली भी आपने डिवाइड कर लिया, जैसे मैम ने कहा कि लेखन बस्ती कैटेगरी बहुत ही लाइंड अप है, पित्त रक्त का कोई उसमें नहीं है, उसकी प्रकृति भी नहीं है, कुछ भी कर लो उसको कुछ भी नहीं होने वाला है गर्म चीज से, या ज्यादा लेखन हो गया तो भी। तो कोई टेंशन नहीं, आप जाइए लेखन बस्ती, यू कैन प्लान फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो स्टार्ट विद यापनाह, ठीक है। एंड इस इन केसेस में जब भी हम लोग मात्रा या अनुआसन जो प्लान करते हैं, वो हम लोग सहचर आदि या इस तरीके से प्लान करते हैं, विच इज नॉट वेरी बृहणात्मक, क्योंकि हमें वो ऑपोजिट नहीं वर्क करना, इसलिए हम लोग फिर सहचर आदि है, या मे बी इन दैट केस दशमूल भी आप यूज कर सकते हो इनके मात्रा बस्ती में। एंड व्हाट अबाउट दैट राजयापन बस्ती जिसमें मानसरस वगैरह ऐड करते हैं, यस है मैम। ना? हाँ हाँ, हाँ। आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ दैट विथ पेशेंट्स ऑफ लो एएमएच, या फिर जो आईवीएफ के लिए पोस्टेड है लेकिन उनका फेलियर हो रहा है, एंड इट इज ऑलरेडी ही शी इज ऑलरेडी 35 अबव। और जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मुस्तदी अपने सो ब्यूटीफुल रिजल्ट, एएमएच लो था पेशेंट का, फिर भी 3-4 साइकिल एवरी टाइम जब भी फॉलिकुलर स्टडी के लिए पेशेंट जाता था, अच्छे 2-2 3-3 फॉलिकल्स दिखते थे। हमने उनका यापन मुस्तदी यापन ही स्टार्ट रखा था। इवन द गायनेकोलॉजिस्ट इटसेल्फ वाज आस्किंग कि आपको इतने अच्छे से फॉलिकल्स, मतलब एएमएच 0.5 होने के बावजूद भी अच्छे अच्छे 2-2 3-3 फॉलिकल एट द एज ऑफ 38 हर हर ओवरी में कैसे बन रहा है। So it was all the miracle of Mustadi Yapar. It has mouse rust, it is Shukra, Bala, Agni Janana, it has Shira in it, and contents is beautifully designed, and itself for low reserve Rasayan category, very, very well used. और वो दूसरा एक क्षीर बस्ती भी यूज करते हैं हम लोग जैसे पेशेंट्स में, है ना? तो Any specific, or you asking only Shira Basti category? तिक्त क्षीर बस्ती कैटेगरी। Yes, yes. Good question. So Panchak Tikta is usually used. So if it has a reference of Charak Siddhi also, that all the Tikta Rasatmak Basti Dravyas are there, and Shira Pak is done. So two conditions I specifically use the same. One is when there is asthi related any issues, or around menopausal perimenopausal signs, complaints of backache or joint pains, tingling sensation, and pain or gait is changed while walking. There is no pain, but there is a change in the posture of walking. A patient around 40-45 and on to menopause, in that condition this tiktak shirbasti works well. Another condition which classics tell is it is in the abhichanda avastha. We can use this tiktak shirbasti. So abhichanda avastha in the sense that
When patient is lean, thin, pitta rakta dominancy, abhischandavastha means any of the kushtha type vyadhi is present already in the patient, and the patient wants to conceive or is in that phase of conceiving. So in that case also this tiktak siddhak shirbasti works well. Ma'am, you can add up few things. हाँ, थोड़ा सा मैं अपना बताना चाहूंगी कि मैंने जो दिया है काफी पेशेंट जैसे होता है ना क्षयज अवस्था, जैसे मुस्तादी यापन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें मुस्ता वगैरह है तो वो क्या करेंगे कि लेखन करके ब्रूहण करते हैं, ठीक है ना। जहाँ अवरोध है, अवरोध के बाद अवरोध होते हुए दोष प्रकोप होते हुए आगे क्षय अवस्था में पेशेंट लैंड अप हो गई है, एंड देन पेशेंट इज डेवलप्ड कि एमिनोरिया हो गया, उसका पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, फॉलिकल डेवलप नहीं हो रहे, क्षय में जाया गया आफ्टर अवरोध, तो वहां पर हम उस्तादी यूज कर सकते हैं। बट ये पंचतिक्त क्षीरबस्ती का जहां तक मैंने देखा है कि पेशेंट सीधे ही सीधे क्षय अवस्था है, पहले से उसका अग्निमांद्य है, रस धातु प्रॉपर नहीं बनी है, उसका प्रीणन नहीं है, उपधातु नहीं बन रही है, फॉलिकल डेवलप नहीं है, टाइप्स ऐसा है। और यूट्रस साइज भी थोड़ा सा कम है, जैसे जैसे नॉर्मल साइज रहना चाहिए, उसे थोड़ा सा आता है ना कि स्मॉल साइज यूट्रस ऐसा है, ओवरीज भी स्मॉल साइज्ड है। ऐसा बहुत अर्ली एज में जैसे गर्ल्स आती हैं, वो मेरे पास अभी मुझे एकदम से बात करते करते याद है कि पेशेंट जो यंग लड़की थी, मैरिज भी नहीं हुई थी, उसको उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाएगा, तुम अपने एग प्रिजर्व करा लो, अदरवाइज तुम्हें कंसीव होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो शी वॉज वेरी मच एंशियस कि मैडम अभी क्या करूं, मुझे ऐसे बोल रहे हैं, तो अभी तो मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। हमने उसको पहले शमन पे डाला क्योंकि शी वॉज वर्किंग, तो मैंने कहा अभी जब तुम्हारे पास टाइम होगा तो यू कम एंड वी विल ट्राई सम थेरेपीज ऑल्सो। तो ओरल मेडिकेशन से हमने उसको स्टार्ट किया, अग्नि मानदेय उसका ठीक किया थोड़ा सा ऐसे करके। फिर वो फिर से आई कि नहीं मैडम, फिर से मेरा गायनोक वहां बोल रहे हैं कि नहीं तुम एग प्रिजर्व करा लो, ऐसे वैसे ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। उस केस में फिर हमने ये पंचतिक्त क्षीरबस्ती, उसमें हमने फलसर्पी ऐड करके उसका किया, वेरी क्योंकि गुड। क्षीरबस्ती तो दिया लेकिन साथ में उसमें फलसर्पी, जैसे घृता हम ऐड करते तो हमने फलसर्पी ऐड किया। तो फिर उसका हमने रिपीटेडली 3 साइकिल्स तक ये तिक्त क्षीरबस्ती वगैरह उसको दिया है, एंड देन उसके फॉलिकल अच्छे से डेवलप हुए। फिर हमें बिना बताए वो फिर अपने गायन का फिर से ओपिनियन जो मॉडर्न में वहां दिखा दी, शायद गंगाराम में दिखा रही थी, तो वहां उसने दिखाया। तो देवर सरप्राइज कि ये क्या हो गया, बोले ये तुमने क्या दवाई ली है जो तुम्हारे तो फॉलिकल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, देवर सरप्राइज्ड। तो वेरी ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम जैसे कि सिलेक्शन, जैसे सिलेक्शन की बात चल रही थी, जैसे कि कौन सी बस्ती कैसे सिलेक्ट करनी है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस था कि हमने इसमें योग बस्ती वगैरह जो हम रूटीन में यूज करते हैं शतपुष्पा वगैरह की, वो नहीं दिया। देखा कि पूरा क्षय है तो ब्रूहण चाहिए हमें, है ना, और पित्त का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, तो हमने फिर तिक्त क्षीर बस्ती के साथ ये ऐड करके तो फिर ऐसे किया। उसका स्पाइसी फूड वगैरह हैबिट भी थी उसकी थोड़ा, उसका नेचर भी था कि जो शॉर्ट टेम्पर टाइप, तो उसको एसेस करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है इसमें ये देते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग केस था, तो मुझे लगा कि क्षीरबस्ती का तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट यू हैव सीन, तो ये ऐसे भी करके तो हम सिलेक्ट करके तो पेशेंट में दे सकते हैं, और उसमें हमें रिजल्ट मिले हैं, मतलब उस केस में। तो फिर उसके फॉलिकल डेवलप हो गए, फिर वो वहां रुक, उनके माने उसके डॉक्टर्स भी, हाँ ठीक है कोई जरूरत नहीं है, तो जो ट्रीटमेंट ले रही हो कंटिन्यू करो। ये थोड़ा सा अलग था कि वो लोग भी माने कि हाँ ठीक है तुम्हारा जो चल रहा है वो ठीक है, डेवलप हो रहा है, अभी दिख रहा है हमें, तो नाउ शी इज फाइन। ये श्वेता कुछ ऐड करना चाहेंगी क्या इसमें, श्वेता गुप्ता चली गई क्या इसको? श्वेता हैज लेफ्ट। नहीं, कोई और अपना व्यू अगर ऐड करना चाहें तो हम एक दो व्यक्ति का अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 10 मिनट्स भी है। डॉक्टर सुशीला कुछ अपना ऐड करना चाहेंगी?
हेलो। हाँ सुशीला नमस्ते। बोलो। हाँ नमस्ते। अनम्यूट नहीं हो रहा। बहुत अच्छा सेशन था मैम, ऐड करने को तो कुछ नहीं है, मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तुम बट पूछ मेरा एक सकते, क्वेश्चन नहीं है मैम। डाउट पूछ सकते हो, है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैम से क्वेश्चन है। वैसे मैम हम्म ने बहुत अच्छी तरह से इंडिकेशन और सभी कुछ बताया, बट कई बारी हमारे पास, जैसे अभी मेरे पास एक केस है, कॉन्टिन्यूसली उसको स्पॉटिंग होती है 15-20 डेज, एडिनोमाइसिस वगैरह ऐसा सच कुछ नहीं है। हमने उसके हेतु में भी मुझे कुछ नहीं मिला। पेशेंट की प्रकृति पित्त कफज है और सारे पित्त के द्रव गुण से मुझे ऐसा लगता है, तो क्या इसमें हम कौन सी मात्रा वस्ती या इस तरह के वस्ती के हिसाब से कैसे जा सकते हैं? ओरल ट्रीटमेंट तो चल रहा है मैम, वस्ती पे आप अगर बता सके तो। अपना एज बताओ तो जल्पा कुछ ऐड करेंगे। मैम पेशेंट अनमैरिड है, एज 22। ओके, फिर तो दो ऑप्शन है, हम ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तो कामिनी मैम ने जो शीर बस्ती का बताया है, ये टिपिकल सीन हो सकता है कि स्पॉटिंग जो होता है, क्राइंग और एंडोमेट्रियम का अर्ली, जो हम बोलते हैं कि एंडोमेट्रियम बिफोर, कुछ पेशेंट्स को बिफोर भी पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स कुछ दिन तक स्पॉटिंग होना। ओके, तो इस केसेस में जैसे मैम ने कहा कि शीर बस्ती भी चलेगी या फिर मात्रा बस्ती विल ऑल्सो वर्क वेल इन सच कंडीशंस। तो मात्रा बस्ती के लिए जब हम पित्ता डोमिनेंसी में जाते हैं, तो हम लोग यूजुअली मैं बला, शतावरी, यष्टि, अमृता, सारीवा जो रस रक्त पे जाए और पित्त कमी करे, इस तरीके से हम लोग ऑप्ट करते हैं। और जब भी at the age of 22, मतलब she is not expecting any more things from us, it is just endometrium अगर हेल्दी बन जाए इस पेशेंट में, हेल्दी भी हो या फिर शायद अगर बीच बीच में स्पॉटिंग हो रहा है, उसका मतलब ये वैषम्यता वात की वजह से भी हो सकती है। एंड उस केस में सिर्फ स्थानिक वात को शमन करने के लिए मात्रा बस्ती विल वर्क वेल। अनदर इम्पोर्टेंट, अगर सेम केस आई विल टेल यू, अगर इसमें क्रॉनिसिटी आई और पृथ्वी या पार्थिव की दृष्टि अगर हमें हेतु से दिखाई दी, तो फिर हम लोग उस दिशा उस डायरेक्शन में सोचेंगे। अदरवाइज एज सच सिर्फ मात्रा बस्ती या शीर बस्ती विल आल्सो वर्क वेल इन दिस सिचुएशन। थैंक यू मैम। यस थैंक यस, यू। मैम इस कंडीशन में चंदन बला लाक्षादी तेल का मात्रा बस्ती अच्छा काम करता है। दे दे सकते, राइट राइट राइट, नाइस इनपुट। Anybody else want to ask or add? We can conclude the session now. कोई आगे क्वेश्चन? हाँ, डॉक्टर भारती हैंड रेस किया है, कैन आस्क डॉक्टर भारती। नमस्कार हाँ बोलो डॉक्टर भारती। पूछना चाह रही हैं डॉक्टर भारती? आपने हैंड रेस किया है। प्लीज अनम्यूट डॉक्टर भारती। हाँ वो अनम्यूट के लिए मैं बोल रही हूँ। अनम्यूट तो किया है पर शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम। हाँ मैडम नमस्कार, बोलो। हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ अब सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी जी। हाँ, मेरी एक पेशेंट है 23 इयर्स एज और पीसीओडी की केस है और हिर्सुटिज्म बहुत ज्यादा उन्हें कंप्लेंट है और जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उनका 80 है अराउंड। तो विच टाइप ऑफ वस्ती कैन वी प्लान फॉर दिस पेशेंट? गुड क्वेश्चन। जैसे
हिर्सुटिज्म को हम लोग मतलब जो केश का अतिवृद्धि, और वो भी जिस जगह पे एक्सपेक्टेड नहीं है उस जगह पे, राइट। सो इसे हम अगर आयुर्वेद में समझे तो केश इटसेल्फ ये अस्थि का एक उपधातु हो रहा है और वो मल भाग ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में जब भी हम लोग अस्थि या वाता, इन दोनों पे जब हम सोचते हैं तब हम लोग को जो रस यूज करना है वो दिखता है। सो हमने ये डिफाइन कर दिया। सेकेंड थिंग इज, जैसे उन्होंने आपने कहा कि उनका टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ इज अ मेल हार्मोन, राइट। सो ये बॉडी में क्या क्या बढ़ाएगा अगर हम सोचे, तो ये पौरुषत्व या वो चीजें ज्यादा बढ़ाता है बॉडी में, राइट। जब मेल में फीमेल से ज्यादा पौरुषत्व होता है या धाड़सपना, जैसे हम बोलते सुकुमारता कम होता है इन पेशेंट में, ठीक है। तो और ये हुआ सेकंड। कैसे सोचना है वो बोल रही हूँ, आंसर तो 1 मिनट में हो जाएगा लेकिन लेट मी कंप्लीट। द थर्ड थर्ड चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, एक तो हमने ये कह दिया कि भाई अस्थि या केश विकृति, सेकंड हमने सोचा कि उसका जो हार्मोन है उससे क्या दिख रहा है, एंड थर्ड जो आपने बताया जो पीसीओ है, अगर इस कंडीशन में होगा, अब आई डोंट नो वात पित्ता कॉम्बिनेशन है वात कफा कॉम्बिनेशन है, वो एक बार डिफाइन कर लो। उसके बाद अगर हम लोग अभी इस कंडीशन को ऑब्वियसली बस्ती से ही लेके जाना है, दैट इज योर कॉल, अदरवाइज आप मेडिसिन से सोचना। अगर बस्ती से आप लेके जाने का सोच रहे हो तो तिक्त रस वाले कौन से बस्ती है, ठीक है। तो उसमें से तिक्त अगर हम शीरवस्ती, कैन वी प्लान फॉर तिक्त शीरवस्ती? तिक्त शीरवस्ती is a good option, why not? Okay, the another one is which I also mentioned here is जो पलाश है उसका भी रस तिक्त है और वो भी पीसीओ में बताया है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। और दूसरी जो मैम ने एक बताया है अभी कि जब भी हम लोग ऐसे कंडीशन में, अगर वो पित्ता डोमिनेंसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ कफ और वाता डोमिनेंसी का रोल है, डिलेड है, तो इस कंडीशन में हम लेखन भी यूज कर सकते हैं। व्हाई लेखन आई वुड लाइक टू टेल इज क्योंकि जो एक सुकुमारत्व होता है उसकी हानि है बॉडी में, ओके। तो थोड़ा सा जड़त्व या स्थूलत्व की वृद्धि है समवेयर। इफ यू गेट अ टिपिकल दैट लाइन ऑफ कि भाई ये संप्राप्ति इस लाइन पर जा रही है तो आप यूज कीजिए, क्योंकि 2-3 और रेफरेंसेस ऐसे हैं कि जब भी तैलम आश उत्तर आहार बोला है या तो कर्ष मतलब कर्षण होने पे फॉलिकल डेवलपमेंट या साइकिल ज्यादा फिट होती है अदर रेदर देन ब्रूहण, इसलिए भी फॉलिकल स्टेज में तैलम आशुत्तर आहार बताया है। हमें क्षीर घृत क्षीरपान नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है? क्योंकि आर्तव इज आग्नेय, तो इसमें उसका सौम्य गुण बड़ा है। शुक्र धातु या टेस्टोस्टेरोन बढ़ना मतलब एक सौम्य गुण की वृद्धि हो रही है बॉडी में और आर्तव की क्षय हो रही है। तो आर्तव वृद्धि कर जो भी आहार विहार है या ड्रग्स है वो आप सब दो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस केस में लहसुन तेल भी बहुत अच्छा काम करेगा बिकॉज लहसुन इटसेल्फ डायरेक्टली आर्तव पे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब जॉइंट पॉइंट्स रन की करोगे तो आपको अच्छे से 2-3 ऑप्शंस तो मिल जाएंगे। लहसुन तेल पीसीओ में टेस्टोस्टेरोन, यस ओके, टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? विच ड्रग वी हैव टू चूज एक्चुअली, वेदर ओरली और मैं तो सजेस्ट मतलब अभी बाकी चीजें देख के ओरल से भी आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसमें अग्नि की थोड़ी सी मान्यता देख के अग्नि पे थोड़ा सा वर्क कर लेना, और डायरेक्टली ड्रग तो मैम आप ही बताओ अभी। डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन ही कम करे ऐसे मैं शॉर्ट आई एम अनेबल टू से राइट नाउ, सो मे बी समवन कैन ऐड। मतलब इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एक्चुअली बिकॉज टेस्ट, ओके, हाँ मतलब वो कोई अभी मेडिसिन दिया और टेस्टोस्टेरोन कम होगा, इट विल बी ऑब्वियसली बहुत चीजों का एक साथ इफेक्ट करके वो कम होगा। तो जैसे मैंने कहा कि सौम्य गुण कम हो के आग्नेय गुण बढ़ने पे आपको वो सौकुमारत्व या वो जो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होने की वजह से चीजें वो कम होगी। मतलब आई श्योरली बिकॉज मेल्स में भी 72 डेज बोले हैं एक स्पर्म को होने में या टेस्टोस्टेरोन के एक्शन को दिखने में, तो वो रिड्यूस करने में
आई एम रियली नॉट श्योर कि कोई भी ओरल या ये भी ये दे दी और एक सिटिंग में हो जाएगा। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, वो ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पकड़ के अगर आप 1.5-2 महीने काम करोगे तो श्योरली वो रिड्यूस होगा। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यस यू यस यस श्योर। थैंक यू थैंक यू। Nice, nice. झाले पण संपलं. हो बरं, तो झालं डिस्कशन. तुला क्लिपला सांगितलं ना, त्याला विचार. पुरी आणा. तुला देऊ काय? पाणीपुरी. कालची पण भाजी तशीच पडली आहे. ओके, नाउ कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको सेशन को कंक्लूड करेंगे। पवन सर, जी session was बिल्कुल। session was really good and all the aspects of Basti have covered in this session and मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स को काफी अच्छा लगा होगा कि कब बस्ती, कौन सी प्रॉब्लम में कैसे सिलेक्ट करनी है। ये थोड़ा सा इस लेक्चर का जो एम था वो मुझे लगता है सक्सेसफुली शी हैज कवर्ड अप ऑल द एस्पेक्ट्स। तो थैंक यू डॉक्टर जल्पा, and thanks to One sir for providing us the platform, and thanks to all the participants for participating and listening nicely the session. Thank you all, sir. आपका दूसरा सेशन स्टार्ट हो सकता है। Over to you, Pawan sir. थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी प्रेरणा से जो वेबिनार सीरीज शुरू हुई है उसमें वाकई में हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान भी मिल रहा है, और मैं आशा करता हूँ जो भी देखेगा अपनी सुविधा से वो कहीं ना कहीं अभिभूत होगा कि ज्ञान का इतना सागर। आप रियली जो स्पीकर सिलेक्ट करते हैं, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड अप्रिशिएटिंग यू फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू डॉक्टर जल्पा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी। Now this session is over. I am switching to next webinar. Okay, thank you. Thank you, Kamini ji. Thank you very much. दो मिनट में हम लोग नेक्स्ट वेबिनार शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर आयुष एक्सपर्ट्स पर है। कृपया रुके रहिए, मैं वेबिनार की लिंक चेंज कर रहा हूं, और इन द मीन टाइम मैडम पारुल जोशी अभी ज्वाइन हो रही हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट बनाना पर है।